Hello, children. A very warm welcome to your EVS class with your learning buddy of Rajat. So, here I am with your Environmental Studies Class 4 by Acknowledge Series Amit Publishing House. All ready to start something new with me? So, today, what we are going to do, we are going to start a new chapter, chapter number 13, that is water. Water. Water is the most important thing of our life. Without water, we cannot survive. Yes, पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है और आज हम इस पानी के बारे में ही पढ़ेंगे. It's water. Why it is important? What is it? How much water is there? So, let's start it. Water is a very important need of all the living beings. All living beings need water to live and grow. Yes, हम सबको पता है ये बात. बिना पानी के हम कैसे रहेंगे? पानी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है हमारी लाइफ. Our Earth is the only planet that has water. हमारा ये जो Earth है, जो planet Earth है, यही एक ऐसा planet है जहाँ पे water. Thus, it is also called the blue planet. इसे blue planet भी कहा जाता है क्योंकि इसी पे water पाया जाता है. About 71% of the Earth's surface is covered with water. We need water for drinking, bathing, cooking, cleaning, washing, etc. Now see the different uses of water. हमें water क्यों चाहिए होता है? पीने के लिए चाहिए होता है, नहाने के लिए चाहिए, cooking के लिए चाहिए, cleaning के लिए चाहिए और washing के लिए भी चाहिए. Farmers need water to grow crops. Crops को पानी नहीं मिलेगा तो वो कैसे उगेंगी? कैसे हमें फिर खाना मिलेगा? So, what are the sources of water now? The main source of water are rain, surface water and underground water. Rain is the main source of water, then surface water and the underground water. These are the main sources of water. Rainwater falls into water bodies like ponds, lakes, rivers and sea. Rainwater जब बारिश होती है तो इनका पानी कहाँ गिरता है? Ponds में, lakes में, seas में. Now rainwater. Rain is one of the main sources of water. सबसे बड़ा source of water जो है वो है rain. It is the purest form of water. Farmers depend on rain to irrigate their fields. अब अपनी fields को irrigate करने के लिए भी उसमें पानी डालने के लिए farmers इस पे dependent रहते हैं, rain पे. ये तो इतने बड़े बड़े farms जो fields होते हैं उसको कैसे irrigate करेंगे? तो जो रेन वाटर है वो फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर. नाउ अंडरग्राउंड वाटर ये क्या? मच ऑफ द रेन दैट फॉल्स सीप्स इनटू द ग्राउंड. हियर इट कलेक्ट्स एज अंडरग्राउंड वाटर. अभी जो बारिश होती है तो पानी गिरता है धरती पे और फिर वो कहाँ चला जाता है? वहां से वो सीप कर जाता है सॉइल के अंदर, नीचे चला जाता है. वहां होता है, वहां जमा होता है अंडरग्राउंड वाटर. इट इज क्लीन एंड सेफ टू ड्रिंक. बिल्कुल साफ पानी होता है. इट डज नॉट कंटेन जर्म्स. इसमें कोई किसी तरह का जर्म्स नहीं पाए जाते. वेल्स, हैंडपंप्स एंड ट्यूबवेल्स आर यूज्ड टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर. अब इस अंडरग्राउंड वाटर के हम खोद के तो नहीं निकाल सकते ऐसे. इसको पीने के लिए कैसे यूज किया जाता है? वेल्स, कुएं बने होते हैं. हैंडपंप्स, ये सब अंडरग्राउंड वाटर से आता है. ट्यूब वेल्स, इसमें भी अंडरग्राउंड वाटर ही आता है. At some places, underground water comes out to the surface in the forms of spring, झरने के फॉर्म में भी. These are common in hilly areas. Hilly areas में ये. Inland water. Lakes, ponds and rivers are the different sources of inland water. They are freshwater bodies. Lakes, ponds or rivers freshwater bodies होते हैं. Now, और ये source है inland water. Lake. अब lake क्या है? A large area of water surrounded by land is called a lake. एक बहुत बड़ा area of water जिसको कि चारों तरफ से किससे surrounded होता है? Land से surrounded होता है. इसे lake कहते हैं. A lake is bigger than a pond.
पॉन्ड छोटा होता है, लेक बड़ा। पॉन्ड, an area of water smaller than a lake, is called a pond. It may be natural or man-made. Pond natural भी अपने आप भी बना हुआ हो सकता है या man-made भी हो। Some ponds dry up during the summer season. कुछ ponds का पानी बिल्कुल सूख जाता है summer season. And now rivers. Rivers originate from glaciers or springs in the mountains. जब glaciers पिघलते हैं तो वहां से river form करके नीचे आते हैं. They also originate from the highlands which get plenty of rainfall. Highlands में जहाँ पे बहुत ज़्यादा rainfall होती है वहाँ से भी ये rivers originate होते हैं. Some of India's biggest rivers like the Ganga, the Yamuna and the Brahmaputra originate in the Himalayas. ये Himalayas में originate होते हैं. These rivers get water from the melting of snow in the mountains. अब Himalayas में जितनी भी snow है वो सब melt होती है जब तो ये rivers form. Thus they carry water throughout the year. क्योंकि वहाँ snow हमेशा रहती है और वो melt होती रहती है और उससे river में पानी आता है. तो ये जो हमारे biggest rivers हैं, ये गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इनको क्या कहा जाता है? These rivers are called snow-fed rivers, क्योंकि ये पूरे साल इसमें पानी रहता है. They carry water throughout the year. That's why they are known as the snow-fed rivers. Some river, now see here, River Ganga originates in the Himalayas. Some rivers depend on rainfall for water. अब कुछ rivers ऐसे हैं जो कि rainfall पे ही dependent रहते हैं water. These are called rain-fed rivers. इनको कहते हैं rain-fed rivers. These rivers carry water only during the rainy season. क्योंकि rain से ही इनको water मिलता है, तो ये rainy season में ही rivers देखने को मिलते हैं. They almost dry up during the summer. Summers में ये सूख जाते हैं. The Godavari, Krishna, Kaveri and Mahanadi are rain-fed rivers. देखिए गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये है snow-fed rivers and Krishna, Kaveri, Godavari and Mahanadi, these are rain-fed rivers. They originate in the Deccan Plateau of South India. ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी and Mahanadi ये कहाँ originate होती हैं? Deccan Plateau in South India. See, Godavari originates in the Deccan Plateau of South India. Now, oceans and seas. An ocean is a large body of water. Ocean जो है बहुत बड़ा large body of water. There are 4 oceans in the world. They are the Pacific, Atlantic, Indian and Arctic Ocean. Again, I repeat, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Arctic Ocean. Fine. A sea is also a large water body, but it is smaller than an ocean. Sea भी बहुत बड़ा water body होता है, but वो ocean से थोड़ा छोटा होता है. There are many seas in the world. World में बहुत सारे seas. Ocean and sea water is salty. Sea water or ocean का water salty. Thus we cannot use it for our day-to-day activities. हम day-to-day activities के लिए ocean और sea का पानी नहीं use कर सकते. The place where sea water meets land is called a coast. जहाँ पे sea water जो है वो land के साथ मिलती है उसे कहते हैं coast. Now see, sea water meeting the land. This is known as a coast. Ways to store water. अब पानी को स्टोर करने के अलग-अलग तरीके हैं. We need water to drink, to do various household activities, cultivate crops and generate electricity. इन सब कामों के लिए हमें पानी चाहिए. Since we do not get rain throughout the year, we need to store and conserve water. अब पूरे साल तो हमें पानी नहीं मिलता है, rain नहीं होती है, तो पानी भी नहीं मिलता है पूरे साल इतना, तो हमें क्या करना होता है? हमें इस पानी को स्टोर करना होता है, कंजर्व करना. This is done by building dams, reservoirs and canals. इन तीनों चीजों
को कंस्ट्रक्ट करने से हम इस वाटर को स्टोर कर सकते हैं। किससे? डैम से, बाय बिल्डिंग डैम्स, reservoirs and canals. A dam. What is a dam? A dam is a wall built across a river to block the flow of water. Now see, ये डैम एक वॉल बना दिया गया है जिससे कि पानी आगे न जा पाए, उधर का पानी उधर, इधर का पानी इधर रह जाए. This water is stored and used to generate electricity. और जो वाटर जो रोका जाता है इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में. A dam also prevents flood. जब फ्लड आता है तो पानी बहुत, फ्लड जब आता है तो पानी बहुत तेज आता है, तो ये जो वॉल बनी रहती है प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द फ्लड, फ्लड को भी रोकता है. Reservoirs. What are reservoirs? A reservoir is an artificial lake constructed behind a dam. डैम के पीछे एक आर्टिफिशियल लेक बनाया जाता है, ये होता है reservoir. Fine. The blocked river water is stored in the reservoir. ये जो ब्लॉक किया गया है डैम बना के वाटर को, उस वाटर को, रिवर वाटर को स्टोर किया जाता है एक रिजर्वॉयर. Later, the stored water is used for various activities. Now, canal. A canal is a channel taken out from a river or a reservoir. It is used to irrigate the fields. Canal क्या होता है? एक चैनल, एक रिवर में से एक चैनल निकाल दिया जाता है जहां से पानी जाता है और फील्ड्स को इरिगेट करता है. पूरे फील्ड्स में वो पानी भेजा जाता है जिससे कि क्रॉप्स को अच्छा पानी मिले. Forms of water in nature. अब नेचर में वाटर किस किस फॉर्म में मिलता है? Water exists in 3 forms in nature. 3 फॉर्म्स होते हैं नेचर में वाटर. Solid, ice, liquid and gas, water vapor. लिक्विड और गैस जो होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, जो सॉलिड होता है वो आइस के फॉर्म में होता है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 फॉर्म. Now we come to some methods. Evaporation and condensation. Water turns into water vapor when it is heated. जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से भाप निकलता है, उसे कहते हैं water vapor. This is called evaporation. क्या होता है? पानी में जब पानी उबलता है, गर्म होता है, उबलता है, तो उसमें से पानी भाप बन के उड़ जाता है, इसे कहते हैं evaporation. Heat from the sun causes water from lakes, streams, soils, etc. to turn into water vapors. अब जब सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी उन लेक्स में पड़ती है, सूरज की रोशनी और उसकी गर्मी से जब पानी भाप बन के उठता है, वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है. The process by which water vapor converts into water is called condensation. अब ये water vapor फिर से वाटर में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन. पहला तो हुआ एवेपोरेशन कि वो वाटर वेपर बन के उड़ा, इवेपोरेट हुआ, दैट इज नोन एज एवेपोरेशन. और वही भाप जो है दोबारा से रेन बन के, पानी बन के वापस जब आता है तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन. The formation of water droplets on the surface of a tumbler of cold water is a result of condensation. जब आप ठंडा पानी निकालते हैं एक ग्लास में तो बाहर उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. आपने देखे हैं, थोड़ी देर बाद उसके बाहर छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द टम्बलर. इसे कहते हैं कंडेंसेशन. फिर से भाप जो है वो पानी में बदल जाता है, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन. नाउ वी कम टू द वाटर साइकिल. इस पानी का क्या साइकिल है? ड्यू टू द हीट ऑफ द सन रेज, water in rivers, lakes and other water bodies evaporate in the form of water vapor. Now children, very carefully look at this water cycle. बड़े ध्यान से देखेंगे इस water cycle को और समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से. It's very interesting. Now see what happens. अब जो धूप जब पड़ती है, जब ये धूप पड़ती है किसी भी वाटर बॉडी पे, तो क्या हुआ? यहाँ से पानी भाप बन के ऊपर चढ़ा, जिसे कहते हैं evaporation. This is known as evaporation. Okay? Now what happens?
The water vapor rises to the colder upper layers of the atmosphere and condenses to form tiny droplets. अब ये evaporate होके ये ऊपर गया और ऊपर गया तो वो ठंडा होता गया. जो भाप बन के गर्म भाप बन के उड़ा था वो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते ठंडा हो गया और टाइनी ड्रॉपलेट्स फिर से बन गए. इसे बोलेंगे हम कंडेंसेशन. फाइन. नाउ आफ्टर कंडेंसेशन व्हाट हैपेंस? These droplets, then what happens? These droplets of water join together to form clouds. अब ये छोटे छोटे जो water droplets थे ये एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? Clouds बनाते हैं. देखिए clouds बन गए हैं. Okay? Droplets of water join to form bigger drops. अब ये droplets फिर से join हुए और bigger बन गया ये drops. When they become heavy, they fall as rain, snow, sleet or hail. अब जब ये बहुत heavy हो जाता है cloud इस water droplets से, तो ये फिर नीचे कैसे आता है? नीचे जब ये आता है in the form of rain या hail या snowfall होती है, इस form में ये नीचे आता है. Rain water collects in streams and rivers and flow to the sea. अब देखिए रेन वाटर फिर से यहाँ कलेक्ट हुआ और सी में चला गया. ओके. इवेपोरेशन टेक्स प्लेस अगेन इन ऑल दीज वाटर बॉडीज. दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. अब देखिए यहाँ से प्रेसिपिटेशन हुआ और पानी सारा नीचे आ गया. देखिए यहाँ से आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, स्नोफॉल हुआ तो हिल टॉप्स पे स्नो जम गई, या बारिश हुआ तो फिर से ये वाटर बॉडीज में सारा पानी आके मिल गया और फिर से इवेपोरेट हुआ और ये साइकिल ऐसे ही चलती जाती. दिस इज नोन एज द वाटर साइकिल. फाइन चिल्ड्रन, होप यू हैव अंडरस्टूड. अच्छा लगा? पढ़ के अच्छा लगा? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू एंड द डायग्राम इज वेरी इंटरेस्टिंग टू. Try to make that diagram and try to understand the water cycle again. So this was all in the chapter and I hope you have learned many things about water, how water is necessary for us, water का use कहाँ होता है, कैसे कैसे किया जाता है use, water को store कैसे किया जाता है, how are dams constructed, the reservoirs are there. Okay, so now the testing time here. Why the earth is referred to as the blue planet? The earth is the only planet which has water in it. That's why it is known as the blue planet. It has 71% of water. What are snow-fed rivers? The rivers like Ganga, Yamuna and Brahmaputra, which have water in it for the whole year, and they get this water from the ice which melts from the Himalayas. So they are known as the snow-fed rivers. What is the main source of fresh water? The main source of fresh water are the rivers, the lakes, and the underground water is also a very good source of fresh water. Now take the correct option, children. The ultimate source of water on the earth is, the ultimate source of water on the earth is rain, sea, pond, river. The rain is the ultimate source of the water on the earth. An example of a large water body is pond, stream, ocean, none. सबसे बड़ा water body कौन सा है? It's the ocean. Rainwater that seeps into the ground is called pond, river, underground water or stream. जो rainwater जो ground के अंदर seep कर जाता है, अंदर चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? Underground water. Now children, condensation is faster on a windy day, sunny day, both or none. Condensation क्या होता है? When the sun rays fall on the water body, it gets evaporated, the water vapors are formed and they evaporate and they go up high.
then they cool down and they form the water droplets. उसको कंडेंसेशन बोलते हैं. तो अगर सनी डे होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी इवेपोरेट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉपलेट्स ऊपर बनेंगी. So the sunny day. The change of water to water vapor on heating is called condensation, evaporation, precipitation, or transpiration. It is known as the evaporation. Now, learn more. Give reasons for the following. Seawater is unfit for drinking. It's unfit for drinking because it is salty. The seawater is salty and we cannot drink salty water in our day-to-day life. Clothes dry faster when dried in the sun. Yes, when the clothes are dried in the sun, the moisture which the clothes have, the wet clothes have, they get evaporated, the water gets evaporated from the sun's heat and the clothes dry more fast. Now children, fill in the blanks. About dash of the earth's surface is covered with water. About 71% of the earth's surface is covered with water. The next one is dash water is clean and safe to drink. Underground water is clean and safe to drink. Fine. Farmers depend on rain to dash their fields. Rain पे क्यों depend करते हैं farmers और क्या करते हैं अपनी fields को वो rain water से? To irrigate their fields. A lake is bigger than a pond. Pond से बड़ा lake होता है. Dash originate from glaciers or springs in the mountain. What originates from the glaciers? Rivers. River originate from glaciers or springs in the mountains. And dash is a large body of water. बहुत बड़ा water body कौन सा है? And ocean is the large body of water. The place where sea water meets land is called a sea water. हाँ land से मिलता है उसे कहते हैं coast. It's known as the coast. Okay. Let's move further. Answer the following questions. Distinguish between snow-fed rivers and rain-fed rivers. याद है अभी पढ़ा था हमने snow-fed rivers कौन से होते हैं, rain-fed rivers कौन से हैं? The rivers which depend on which throughout have the water in it and they get the water from the glaciers and ice that melts, the snow that melts from the Himalayas. So they are known as the snow-fed rivers like Ganga, Yamuna and Brahmaputra. And the rain-fed rivers are the rivers which depend on the rain for water in them, for having water like Mahanadi, Godavari, Kaveri. Okay, these are the rain-fed rivers. Now evaporation and condensation. When the sun rays fall on the any water body, the water heats up and evaporates. And when these water vapors go higher in the air, there they start cooling down and form small droplets. When this is known as only the evaporation. So evaporation is the one the water evaporates, forms in the form of water vapor. They evaporate from the water body and goes up. And the condensation, when these water vapors they cool down and form small droplets, and these droplets then form the clouds, that is known as the condensation. Lake and pond. A lake, the pond is a smaller water body than the lake, and they are natural also, and these ponds are natural also and man-made also. Describe some ways to store water. To store water, we can store water by the underground waters can be stored which go deep down the earth when the rain falls and the seepage is there.
Then these water, they go underground, and there they are stored. And the water can be stored by constructing dams on the rivers and making reservoirs there. What is a dam? How it is useful to us? When on a river, a huge wall is constructed in between to stop some water from going down to the other side, and there it is stored in the form of in the reservoir that is known as the dam. These dams prevent us from floods also. What is the water cycle? Support your answer with the diagram. Now children, you have seen, you have read the water cycle, और आपने diagram भी देखा है वहाँ पे बना हुआ. किसको इस diagram को बनाएंगे, and you have to write about the water cycle. The evaporation happens, then the condensation happens, and then how the water comes back to the water bodies in different ways. Now we come to the activity, children. Why are water droplets formed on the outside of a glass of cold water? The water droplets form on the outside of the glass of cold water due to the process of condensation, because when the water cools down, the vapors cool down, they form the water droplets. Make a poster on the importance of water conservation. Water को क्यों conserve करना है? Water conservation पे एक poster बनाएंगे. You have to make a poster. Write a short paragraph on the importance of water conservation and read it out in the class. अब आपको पता चल गया होगा कि वाटर को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, कहाँ कहाँ काम आता है वाटर हमें. So we need to conserve it also. So write a paragraph on it. Make a chart showing one example each of evaporation and condensation. अब evaporation कैसे होता है? वाटर जब हीट होता है तो उसमें से भाप बन के वो निकलता है, उसका एक एग्जाम्पल शो कीजिए. एंड कंडेंसेशन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, इवेपोरेशन कैन बी शोन बाय द ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स ऑन अ क्लोथ लाइन. बाहर धूप में कपड़े सूख रहे हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. कंडेंसेशन, अ कोल्ड वाटर बॉटल इज केप्ट and it forms the droplets outside, that's condensation. Then make a chart on water cycle. Water cycle पे एक अच्छा सा chart बनाएं. So children, here we end the chapter, and wasn't it an interesting one? Reading about the water, what are the different forms of water, how we can conserve it, why we need to conserve the water, क्यों हमें conserve करना चाहिए water को, don't waste water. Every time it is said that if we waste water, we'll not get water in future. So here I end the chapter, children. Stay excited for the clamp of another video. I'll see you soon. Till then, bye.